ऑफ अ डिफरेंट काइंड बनने जा रही है, क्योंकि हम सब लोग उससे डायरेक्टली इनडायरेक्ट बढ़ते जा रहे हैं। नंबर जो इफेक्ट होंगे कि वो इस शहर में भी हो रही है, अगले शहर में भी हो रही है, वो फैमिली भी इफेक्टेड है, तो बहुत ज़्यादा हमारा इंक्रीजिंग नंबर उसके साथ इफेक्ट होगा। तो दैट वाज द पॉइंट ऑफ दैट राइटिंग। मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों की सेल्फ डिस्ट्रक्टिव स्ट्रीक। 2017 में I wrote What Muslims Ahmed Who? Positive achievements by a large group of people in a broad sense, yes. Christians can take credit for the modern world, the West. Hindus have a rising India to boast of. Jews, fewer in numbers, hold sway over finance and media. Atheists govern the powerhouse that is China. Now show me some positives, a positive we Muslims have on display. 1.7 billion is only a number. Some oil-rich Gulf states, as if having oil is a measure of performance. What else? Still thinking, am I missing anything? Bits and pieces people, what is our mutual claim to fame? Soul searching or shifting the blame? What is our best foot forward? Not self-combustion, backstabbing, and terrorism. We total less than the sum of our parts. Thus, I am not getting used to being called out and kicked around when one more time we can turn out excited, brilliant, and proud. Only how? अब दुनिया पे आते हैं। दुनिया पे मैंने जैसे कहा कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, 3 घंटे की सर्जरी करके निकलता हूँ, कमर मेरी स्टिफ होती है। तो मैं कहता हूँ कि मैंने क्या किया। फिर मैं बाहर निकलता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, तो कुछ उधर लोग मर चुके होते हैं, कुछ उधर मर चुके होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर आप सोचें इस बात को, तो हम लोग इन्वॉल्व हैं एज मुस्लिम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पिछले 20 साल में दुनिया की स्ट्रगल्स में। इस वक्त इसराइल और पैलेस्टीन चल रहा है, हम मुसलमान हैं, वो हम बचपन से इसको सुनते आ रहे हैं, हम उसमें इन्वॉल्व हैं। और उससे पहले ज़्यादा दूर नहीं है, 20 साल हम वॉर ऑन टेरर चली है, जिसमें हम राइट इन द मिडल थे। ये अभी मैंने लिखी है म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव स्ट्रीक, द इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट. Insanity is doing the same thing over and over and expecting different results. Believers of one God, same genes and blood, children of Abraham, same Abrahamic faith. At each other's throat, neighbors in permanent conflict, finite acting infinite, utter humiliation, awful promotion of God and religion. Punishing populations for being, self-defeating prophecy, mutually destructive streak. How can be arrested? What is their quality of life? How well do you sleep? Disconnected prosperity, piling on misery for them, us, and all, on the rise in America, both anti-Semitism and Islamophobia. Self-serving righteousness, selective conscience, ignoring that wars have no winners, just categories of losers. Ours and them is all us, all humans on a tiny earth where the powerful can be more responsible. The elusive peace shall never be, unless for everyone, peace for all, or peace for none. Children of one God, have lost the plot. I wonder how thrilled is their common God. Now let me guess,
his response. 2014 में हम लोग smack in the middle of war on terror थे, जिससे a lot of my book का जो journey थी वो उसी टाइम में शुरू हुई थी. I wrote Where Are the Mandelas and the Gandhis of this Century in 2014. The Pandora box of terrorism and a world spinning on its head for our choice of dying, which is a better death, from terrorism or as collateral damage. Either way, if you notice, the dead invariably stay dead. Watching, waiting gods, please look away. Show you some patience, hold your say. Wait till your judgment day. Unless we, the chosen ones, you are confusing with angels. Lest you forget, we're not done killing our own, not just yet. These crazy proxy modern wars, with people dying on all sides, some not knowing why or for what cause. If killing would make the world safer somehow, wouldn't this be a very safe planet by now? If wars were the solution, where is the lived happily ever after conclusion? تو یہ میں نے یہ جو تھیم آج کی تھی میں نے پریزنٹ کی کئی اینگل سے. اب میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں سولوشنز کی. آئی مسٹ سے دس ہیئر کہ جو میں جانتا ہوں اس آڈینس کو جو یہاں بیٹھی ہے, اسپیشلی اپنا پن آڈینس, یہ بہت اسمارٹ لوگ ہیں, بہت ان کا جو انٹلیکٹ ہے ماشاء اللہ بہت دا کریم آف دا کریم. تو یہ مجھے ذرا مزہ بھی آیا یہ جو آج میں نے ٹاپک ڈسکس کیا ہے, اور سولوشنز کا جو تھوڑا سا مجھے اس میں سمجھ آئی ہے کہ سب سے بڑی چیز ریئلائزیشن اینڈ ایکسیپٹنس ہے, کہ جیسے انڈیویجول لیول پہ یا قوم کی لیول پہ اس بربادی کو دیکھنا کہ آپ کو کیا چیز, آپ اگر سلائڈ ڈاؤن کر رہے ہیں تو کیا چیز ہے جو آپ کو انڈیویجولی یا کلیکٹیولی یا ایز اے نیشن یا ایز اے ملک آپ کو کیا چیز آپ اس کو ریئلائز کریں کہ کیا ہمیں کمی ہے اور ایکسیپٹ کریں اس کو. آئی تھنک دس از دا بگیسٹ پارٹ آف آل دس. یہ ایٹ لیسٹ آدھی جو کامیابی ہے وہ اسی میں ہے کہ آپ اس چیز کو ریئلائز کریں اور ایکسیپٹ کریں. اور پھر میرا کیا رول ہے, میں چیز کیا بہتر کر سکتا ہوں. ہم ہمیشہ دوسرے پہ ڈالتے ہیں, لیکن میرا کیا رول ہے, میں اپنے لیے دوسروں کے لیے کیا بہتر کر سکتا ہوں. اور یہ جو سیلف ڈسٹرکٹیو اسٹریک ہے ملک کی, قوم کی, لوگوں کی, اس میں آج کل جیسے بڑا ہاٹ ٹاپک ہے اسرائیل اور پیلسٹین کا, اس کو میں بڑھا رہا ہوں یا اس کو میں گھٹا رہا ہوں, اس کو میں am I adding to it or am I trying to arrest it. اور ایک اور مجھے چیز بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہے کہ مجھے تو میں غلطی کروں تو مجھے سیکنڈ چانس چاہیے, مجھے تھرڈ چانس چاہیے, میں روز اللہ سے معافی مانگتا ہوں اپنی غلطیوں کی, مجھے بار بار چانس چاہیے. لیکن ہم دوسرے کو چانس دیتے ہیں جو ہمارا دشمن ہوتا ہے یا ہمارے ساتھ جو اپوزٹ سائڈ پہ ہوتا ہے, ہم اس کو چانس دینے میں ذرا کنجوسی کرتے ہیں. اور ایک اور میرا پوائنٹ ہے جو 2018 میں I wrote this I believe. Such is the nature of this beast that I believe not one conflict of any nature or scale is an unequivocal complete fault of only one side. Not one. And if this premise can be agreed upon, then therein lies the solution. ایک اور میں نے لکھا تھا ایک لائن کا, a question. Religion, race, region. How can we fight over something we don't choose but are born into? اور finally جو آخری میری آج کی جو چیز میں پڑھوں گا وہ 2021 میں نے لکھا تھا, my conviction
मेरा मानना ये है कि जिन कौमों ने, जिन लोगों ने, जिन ग्रुप्स ने, जिन सोसाइटीज ने, जिन एसोसिएशंस ने ये चीज मास्टर कर ली है, अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव स्ट्रीक को रोकना, उसको जीतना, उसको कंट्रोल करना, वो दे आर डूइंग रियली वेल. 2021 में I wrote my conviction, without the wait for the afterlife, the reward and retribution are playing out in real time. Thus, nations doing better are where most people treat each other well. And where people abuse one another are the countries low on the pedestal. It is palpable. The conduct of the greater population becomes the fate of that nation. तो ये मेरा, इसके साथ मैं यहाँ रुकता हूँ, और अगर कोई कमेंट है, चीज़ है, ये पर्सपेक्टिव था, इसमें कोई मैं किसी को नहीं कहता कि कोई मुझसे एग्री करे या डिसएग्री करे. इट वाज जस्ट अ पर्सपेक्टिव व्हिच आई एम ऑनर्ड टू प्रेजेंट हियर. Ron, if somebody has any questions. अगर किसी को डॉक्टर आरिफ से कोई क्वेश्चन है तो, और इनकी जो प्रेजेंटेशन थी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज, इट्स एन इंटरैक्टिव डिस्कशन, तो अगर है कोई क्वेश्चन तो बोलिए. ओह, ये लीजिए. First of all, thank you so much, Doctor. I'm really impressed by everything that you've said. So in regards to self-destructive streak, आपने कहा कि उसको रोकना, right? और उसको, I think also उसको समझना भी चाहिए, to identify first कि self-destructive है क्या. So sometimes you might actually have to get to that point. और see जितनी भी हमने societies देखी हैं आजकल जो prosper कर रही हैं, उन्होंने सीखा, पहले उन्होंने उधर तक पहुंचे और उन्होंने अपने आप को बहुत ख़राब किया. आज से बहुत, not too far ago, there were countries who were struggling for freedom, there were countries, slavery थी, ये सारी चीज़ें थी. तो बहुत सारी जो nations हैं जो गुजरी इन चीज़ों से, उन्होंने अपनी self destruction तक पहुंचे, सीखा और फिर अपने आप को change किया. So I think that's also important कि रोकने से पहले identify करें क्या है. Thank you. Anyone else? Dr. Arif. Ron, after that, there is a question here. Gilly. Thanks so much for such a beautiful backdrop you have written and your comments. So we discussed last night too, and you were put a light on that one. What I always talk. So the civic engagement. Why we are behind as a Muslim, as a Pakistani? What's the reason? You know that I'm a little bit active, politically active. I'm a Democrat. I'm not supposed to say anything political. I was elected on a Democratic State Committee last year. Then I was elected as the chair of the American Caucus of Pennsylvania, and I represented all the ethnic community here in Pennsylvania in the committee. So, how can we have more people engaged, please? जबरदस्त क्वेश्चन है उमर. और यार मेरा मानना ये है, मैं देख रहा हूँ ये एंगेजमेंट में अपना का, आई एम अ क्लोज ऑब्जर्वर ऑफ अपना, क्योंकि अपना क्या है, अपना हम सारे अपना है. तो मैं अपना हूँ और अपना मैं हूँ, तो हम सब अपना है. तो आई एम सीइंग दिस चेंज. सी, थॉट प्रीसीड्स एक्शन. थॉट में चेंज मैं देख रहा हूँ. ये चेंज जैसे इन्होंने यहाँ बहन ने कहा कि ये ओवरनाइट नहीं आता. कौमें अपने आप को तबाही के दहाने पे तबाह करके फिर वापस आएंगी. हम बात कर रहे हैं कि हम अगर स्लाइड कर रहे हैं तो हम स्लाइड अपनी अरेस्ट कर लें.
इंडिविजुअली और कॉम की लेवल पे। तो मुझे ये लगता है कि हमारे में ये थॉट आ रही है, ये हमारी अवेयरनेस आ रही है, एटलीस्ट अपना में मुझे नजर आ रही है। अब मैं अपनापन में यहाँ आया हूँ, ये जो इस वक्त जो थॉट प्रोसेस जो अपना में हम जितनी कोलिजियलिटी देख रहे हैं, जितनी प्रोग्रेसिव हम सोच देख रहे हैं अपना में, ये एक चेंज है। और बाकी हमें ये बिल्कुल समझनी है बात कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है हर लेवल पे, और पॉलिटिक्स और उसमें भी हमें साथ जोड़ना है और बिल्कुल जुड़ना है। There was one question here, right? Usman Anwar. Arif, such a small world. We were in the same college, same place, around the same time, and I get to see you sitting next to me after so many years. Impressive presentation, nice journey, and desire to make a change. The question I have is that reflection and what is self-destruction. You highlighted that. But what we can do, what is your advice? That what should be the solution? Is it more introspection? It is more engagement, more self-awareness, and how to improve the trajectory of improvement of our society, our community, our nation. Long question, but it is painful to see where we are, and we are still sliding. जैसे मैंने कहा कि हमें जैसे मैं कोई तुरम खान नहीं हूँ, मुझे मेरे वालदा के बाद सबसे अच्छी मेरी बेगम जानती है, मेरे मामू की बेटी भी है, तो वो मुझे इतने से देख रही हैं बड़े होके, तो शी नोज मी इनसाइड आउट। उनको पता है कि ऐसा पैदा नहीं हुआ था, ये मैं जर्नी के बाद 60 साल के बाद मैं अब यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो ये सफ़र हम सबको करना है एज एन इंडिविजुअल और एज अ कॉम, और उसमें हमें अपने आप को भी माफ़ करना है और अपने दुश्मन को भी माफ़ करना है। हमें ये समझना है कि कोई दुनिया में मेरी दुनिया की बहस से लड़ाई से लेके इसराइल पैलेस्टीनियन लड़ाई से इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स की लड़ाई में 100% गलती कोई गलत और 100% सही नहीं होता, शेयर्ड होती है गलती, मेरा मानना ये है। तो जब ये चीज़ आपने मान ली, जब आप सेकंड चांस अपने लिए चाहते हैं, खुदा से मांगते हैं, तो आप दूसरे को क्यों नहीं देते? और फिर इसका रिवॉर्ड क्या है? इसका रिवॉर्ड जैसे उमर ने कहा कि अगर ये गुर हमें आ गया तो वो कौमें, जैसे बहन ने कहा कि वो कौमें अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जत दी हुई है। तो दैट इज द रिवॉर्ड फॉर ऑल दिस। इसको रियलाइज करना और एक्सेप्ट करना, और ये अपने से शुरू होता है। तभी मुझे ना वो लोग जरा खटकते हैं जो अपने आप पे क्रिटिक नहीं ले सकते। मैं सबसे पहले शुरू ही अपने आप से करता हूँ कि आई एम नो चैंपियन। मैं कोई सबसे बड़ी गलती की जो गलतियाँ, और मैं ये तो मैंने जैसे कहते हैं ना सरफेस टच किया था, जो मेरी गलतियाँ जो मैं बयान ही नहीं कर सकता और मेरी और मेरे खुदा के बीच में हैं। सो कहने का मतलब ये कि आप अपने आप से जर्नी शुरू करते हैं। Thank you very much. I just want to reflect on this, and it was reminding me of a discussion my wife and I had with our son. He was 7 or 8 years old, and Adam was telling him what you want to do for the next year. We were on vacation, and end of the vacation, we as a family sat down and then said, okay, what you want to do? He was very timid, and the comment which he made still resonates with the same. He said, Abu, I need to learn it's okay to let it go.
Arif, thank you so much for an amazing lecture. We appreciate that. We just have started serving the dinner, so we are calling table by table.